Ethics are norms or standards of behavior that guide moral choices, but our behavior and our relationship with others. The goal of ethics in research is to ensure that no one is harmed or suffer adverse consequences from research activities. The objective is usually achieved. However, unethical activities are pervasive and includes violating non-disclosure agreement, breaking respondent confidentiality, misinterpreting results, deceiving people, invoicing irregularities, अवॉइडिंग लीगल लायबिलिटी एंड मोर। ये जो चीज़ें हैं ये मैं लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस कर चुकी हूँ। अब जो है वो हम आगे इसकी जो डिटेल्स हैं वो देखेंगे। डिसेप्शन क्या है? डिसीव करने की जब हम बात करते हैं तो व्हाट डज डिसेप्शन एक्चुअली मीन? Deception occurs when the respondents are told only part of the truth or when the truth is fully compromised. आप आधी चीज़ उनको बताते हैं जिनसे आप डाटा कलेक्ट कर रहे होते हैं, आधी चीज़ उनको नहीं बताते। Some believe this should never occur. कुछ जो रिसर्चर्स हैं उन्हें लगता है कि कभी भी नहीं होना चाहिए। अदर सजेस्ट टू रीजंस फॉर डिसेप्शन। कुछ कहते हैं कि डिसेप्शन इज इनएविटेबल, मतलब डिसेप्शन के बगैर आप कोई भी डाटा कलेक्ट नहीं कर सकते। उसके पीछे रीजन क्या? नंबर 1 टू प्रिवेंट बाइसिंग द रिस्पोंडेंट्स बिफोर द सर्वे और एक्सपेरिमेंट, एंड नंबर 2 टू प्रोटेक्ट द कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ अ थर्ड पार्टी, एग्जांपल फॉर द स्पॉन्सर। कि पहली जो रीज़न हो सकती है डिसेप्शन की, वो हो सकती है कि आप जो है वो जो रिस्पोंडेंट्स हैं जिनसे आप आंसर्स ले रहे हैं उनको पहले कोई चीज़ डिस्क्लोज नहीं कर रहे, क्योंकि आप चाहते हैं कि उनके आंसर्स जो हैं वो कम्प्लीटली अनबायस्ड हैं। ठीक है, आप चाहते हैं कि वो जो है वो न्यूट्रल माइंड के साथ रिस्पॉन्ड करें किसी भी सर्वे को या किसी भी एक्सपेरिमेंट को या किसी भी क्वेश्चनर को। दूसरी चीज़ ये है, यू ट्राई टू प्रोटेक्ट द कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ द थर्ड पार्टी। वो पूरी चीज़ आप इसलिए नहीं बताते कि आपने कोई एनडीए कॉन्फिडेंशियलिटी थर्ड पार्टी की आपने उसको सेफगार्ड करना होता है या उसको सिक्योर करना होता है। अच्छा, फिर ये है कि एग्जाम्पल फॉर द स्पॉन्सर, कौन स्पॉन्सर कर रहा है इस चीज़ को। डिसेप्शन शुड नॉट बी यूज इन एन अटेम्प्ट टू इम्प्रूव रिस्पॉन्स रेट्स। डिसेप्शन को आप यूज़ नहीं कर सकते इन एन अटेम्प्ट टू इम्प्रूव रिस्पॉन्स रेट्स। रिस्पॉन्स रेट्स को आप जो है वो इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए डिसेप्शन को यूज़ नहीं करना चाहिए आपको। मतलब ये कि आपको किसी को ऑन पर्पस गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देनी चाहिए। मतलब ये कि हो सकता है कि अगर आप उसको पूरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दें तो वो रिस्पॉन्ड ही ना करे, या रिस्पॉन्ड जो है वो ठीक तरीके से ना कर पाए। तो रिस्पॉन्स के जो रिजल्ट, आप कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन पहले से डिस्क्लोज ना करें या ऐसी इन्फॉर्मेशन विदहोल्ड ना करें जिससे जो आपके रिजल्ट्स हैं वो इम्प्रूव हो सकते हैं। इसको आप डिसेप्शन कहते हैं। द बेनिफिट्स टू बी गेन बाय डिसेप्शन शुड बी बैलेंस अगेंस्ट द रिस्क टू द रिस्पोंडेंट्स। When possible, an experiment or interview should be redesigned to reduce the reliance on deception। आपको चाहिए कि डिसेप्शन को मिनिमाइज करें अपने जो भी आप रिसर्च वर्क करें उसके अंदर से। यूज ऑफ डिसेप्शन इज inappropriate unless deceptive techniques are justified by the studies expected scientific, educational, or applied value, and equally effective alternatives that do not use deception are not feasible। अब जो डिसेप्शन है उसको इस्तेमाल करना इज यूजुअली इनअप्रोप्रिएट until unless आप कोई ऐसी डिसेप्टिव टेक्निक्स को यूज़ ना करें हो, जस्टिफाई जो आप कर सकते हो बाय द स्टडीज एक्सपेक्टेड scientific, educational, or applied value, and equally effective alternatives that do not use deception are not feasible. And finally, the respondents must have given their informed consent before participating in the research। हो सकता है कि जो आपके रिस्पोंडेंट्स हैं दे हैव गिवन देयर इन्फॉर्म कंसेंट, उनसे आपने पहले कंसेंट ले लिया हो बिफोर पार्टिसिपेटिंग इन द रिसर्च, और उसके अंदर कोई डिसेप्शन की बात ना हो, सारी चीज़ आपने डिस्क्लोज की हुई हो। इन्फॉर्म कंसेंट क्या होता है? Securing informed consent from respondents is a matter of fully disclosing the procedures of the proposed survey or other research designed before requesting permission to proceed with the study। के प्रोसीजर आप कौन सा फॉलो कर रहे हैं, आप किस तरह की इंफॉर्मेशन निकालना चाह रहे हैं, आप रिसर्च किसके लिए कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, रिसर्च जो है वो कितने टाइम के लिए कर रहे हैं, इसके क्या फ़ायदे होंगे, सारी चीज़ें आप बता के उनसे आपका एक इन्फॉर्म कंसेंट या सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करके आप उनकी मर्जी
से वो इन्फॉर्मेशन गैदर कर लेते हैं. देयर आर एक्सेप्शंस दैट आर्ग्यू फॉर अ साइन कंसेंट फॉर्म. बाज़ दफ़ा जो है बाज़ लोग साइन कंसेंट फॉर्म को भी साइन करते हैं. व्हेन डीलिंग विद चिल्ड्रन इट इज़ वाइज टू हैव अ पेरेंट और अदर पर्सन विद लीगल स्टैंडिंग साइन अ कंसेंट फॉर्म. अगर आप बच्चों से रिलेटेड कोई रिसर्च कर रहे हैं तो उनके जो गार्डियंस हैं या उनके जो पेरेंट्स हैं वो इनफॉर्म कंसेंट साइन को फॉलो जो है वो साइन करते हैं. अच्छा, इनफॉर्म कंसेंट को साइन कराने का एक रीज़न ये भी हो सकता है कि वो आप इन्फॉर्मेशन कहीं पे भी यूटिलाइज कर सकते हैं. जो रिस्पोंडेंट जब इन्फॉर्म कंसेंट साइन के ऊपर फॉर्म के ऊपर साइन कर देता है तो उसका मतलब ये होता है कि आपने जो है अ, अपनी पूरी परमिशन दे दी कि आप जो भी इंफॉर्मेशन उनको प्रोवाइड कर रहे हैं. If there is a chance that the data could harm the respondent or if the researchers offer any limited protection of confidentiality, a sign form detailing the types of limits should be obtained. अच्छा, if there is a chance that the data can harm the respondent कि जो आप जवाब दे रहे हैं जिससे आप डाटा कलेक्ट कर रहे हैं उसको आप हार्म कर सकते हैं, उसको नुकसान पहुंचा सकते हैं. और if the researchers offer any limited protection or confidentiality, a sign form detailing the types of limits should be obtained. अब उसके अंदर जो है वो आप एक पूरा डिटेल फॉर्म जो है उससे ले लें अपने रिसर्चर से या अपने स्पॉन्सर से जिसके अंदर वो बता दें कि हम ये चीज़ें आपको आगाह कर रहे हैं, उसके ऊपर आप भी साइन कर लें और वो भी साइन कर लें. फॉर मोस्ट बिजनेस रिसर्च ओरल कंसेंट इज सफिशिएंट. ज़्यादातर बिजनेस के अंदर ओरल कंसेंट ही जो है उसको काफ़ी समझा जाता है. In situations where respondents are internationally or intentionally or accidentally deceived, they should be debriefed when the research is complete. अच्छा, अब हो सकता है कि आपने इनिशियली ना लगा हो आपको कि आप किसी को डिसीव कर रहे हैं, किसी को धोखा देने हैं, इंफॉर्मेशन विथहोल्ड कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही आपको पता लगे बाय द एंड ऑफ द रिसर्च इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज द रिसर्चर कि आप उनको इन्फॉर्म कर दें कि जी हमने उस टाइम आपसे इन्फॉर्मेशन ली थी जो कि तब हमने कहा था कि इस पर्पज़ के लिए, लेकिन अब हमें लगता है कि इसका पर्पज़ जो है वो चेंज हो चुका है. अच्छा जी, डीब्रीफिंग क्या होती है? इट इन्वॉल्व सेवरल एक्टिविटीज फॉलोइंग द कलेक्शन ऑफ डाटा, एक्सप्लेनेशन ऑफ एनी डिसेप्शन, डिस्क्रिप्शन ऑफ द हाइपोथेसिस, गोल और पर्पस ऑफ द स्टडी, पोस्ट स्टडी शेयरिंग ऑफ द रिजल्ट्स, पोस्ट स्टडी फॉलो अप, मेडिकल और साइकोलॉजिकल अटेंशन. डीब्रीफ करने का मतलब ये है कि आप उसको डिटेल में एक्सप्लेन कर दें. फर्स्ट द रिसर्चर शेयर्स द ट्रूथ of any deception with the participants and all the reasons for using deception in the context of the study's goals. In cases where severe reactions occur, follow-up medical or psychological attention should be provided to continue to ensure the participants remain unharmed by the research. अब ये देखें, ये जो मैंने बात पहले भी डिस्कस कि रिसर्चर जो है वो सारी बातें जब बता देता है, बाज़ दफ़ा मेडिकल लेवल की कोई रिसर्च हो रही होती है, साइकोलॉजी से रिलेटेड कोई रिसर्च हो रही होती है जिसके अंदर आपने कोई मेडिसिन खानी होती है, कोई वैक्सीनेशन लगवानी होती है, उस केस के अंदर अगर वो चीज़ बैकफायर कर देती है या किसी को नुकसान पहुंच रहा होता है, किसी की हेल्थ जो है वो डिटोरिएट हो रही होती है, किसी को कोई रिएक्शन हो जाता है, तो उस केस के अंदर जो रिसर्चर है, जो स्पॉन्सर है, वो उसके पूरे मेडिकल और साइकोलॉजिकल जो एक्सपेंसेस हैं उनको एक तो बर्दाश्त भी करता है और दूसरा उसको फॉलो अप भी करता है. इवन व्हेन द रिसर्च डज नॉट रिसीव द रिस्पोंडेंट्स इट इज़ अ गुड प्रैक्टिस टू ऑफर देम फॉलो अप इंफॉर्मेशन. सो इट बिकम्स रियली इम्पॉर्टेंट कि आप उनको जो है एक फॉलो अप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें. This retains the goodwill of the respondent, providing an incentive to participate in the future research projects. For surveys and interviews, respondents can be offered a brief report of the findings. अब जो आपके सर्वेज हैं और इंटरव्यूज हैं उसके अंदर रिस्पोंडेंट्स को आप जो है वो एक ब्रीफ रिपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं. Usually they would not ask for एडिशनल इन्फॉर्मेशन. ज़्यादातर रिस्पोंडेंट्स इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के अंदर इंटरेस्टेड नहीं होते, लेकिन इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप उनको कंप्लीट सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें. फॉर एक्सपेरिमेंट्स all participants should be debriefed in order to put the experiment in context. Debriefing usually includes the reception of the hypothesis being tested and the purpose of the study. जितने भी एक्सपेरिमेंट्स होते हैं उसके अंदर जितने भी पार्टिसिपेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं उनको आप पहले से जो है वो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दें, एक डी ब्रीफ दे दें, उनको बता दें कि जी क्या क्या हो सकता है, क्या क्या चांसेस हैं इस एक्सपेरिमेंट के दौरान, जो है वो पॉजिटिव बातें क्या हो सकती हैं, नेगेटिव बातें क्या हो सकती हैं, सारी चीज़ें आपको पहले से बता देनी चाहिए. आप जो है वो अपने हाइपोथेसिस की डिस्क्रिप्शन बताते हैं और फिर उसके बाद जो है वो बताते हैं कि आप उसको टेस्ट करें और बताते हैं कि आपने ये स्टडी क्यों कंडक्ट करने का फैसला किया, पर्पस ऑफ स्टडी क्या था.
Participants who were not deceived still benefit from the debriefing session. They will be able to understand why the experiment was created. The researchers also gain important insight into what the participants thought about during and after the experiment, to what extent do debriefing and informed consent reduce the effects of the deception. अब deception को कम करने में debrief करने का और informed consent का क्या role है? Research से बात साबित हुई है that the majority of the respondents do not resent temporary deception and may have more positive feelings about the value of the research after debriefing than those who did not participate in the study. ठीक है, तो वो जो लोग पार्टिसिपेट नहीं करते, जिनको आप डीब्रीफ करके जो है वो पूरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करके उनका इन्फॉर्म कंसेंट लेके उनसे इंफॉर्मेशन जब लेते हैं, उन उनका जो रिस्पॉन्स होता है वो ज़्यादा पॉजिटिव होते हैं. दे आर मोर कोऑपरेटिव, दे आर मोर रेडी टू कोलैबोरेट और कोऑपरेट विद द रिसर्चर, और वो आपको ज़्यादा और अच्छे तरीके से डाटा प्रोवाइड कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं. आपका जो पर्पस ऑफ स्टडी है उसके बारे में बेहतर तरीके से वो आपको हेल्प आउट कर सकते हैं. सो मूविंग ऑन. अच्छा जी, राइट्स टू प्राइवेसी क्या है? ऑल इंडिविजुअल्स हैव राइट टू प्राइवेसी एंड रिसर्चर्स मस्ट रिस्पेक्ट दैट राइट. The privacy guarantee is important not only to retain validity of the research but also to protect respondents. The confidentiality of the survey answers is an important aspect of the respondents' right to privacy. Once the guarantee of confidentiality is given, protecting the confidentiality is essential. The researcher protects the confidentiality in several ways. कि आप किसी का जो है, अगर उसने कहा है कि आप नाम या पता या जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है उसको आप सीक्रेट रखेंगे, कॉन्फिडेंशियल रखेंगे, किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे, तो वो आप किस तरह से कर सकते हैं एज अ रिसर्चर. उसके कुछ तरीके हैं. ऑब्टेनिंग साइन नॉन डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट्स. आप एनडीए साइन कर लें या आप खुद साइन कर दें जिसके आप अंदर आप बताएं कि जी हम ये इन्फॉर्मेशन के भी डिस्क्लोज नहीं करेंगे. रिस्ट्रिक्टिंग एक्सेस टू रिस्पॉन्डेंट्स आइडेंटिफिकेशन. आप नाम ना बताएं, एज ना बताएं, पता ना बताएं, शहर का नाम ना बताएं, एड्रेस ना बताएं. रिवीलिंग रिस्पॉन्डेंट्स इन्फॉर्मेशन ओनली विद रिटन कंसेंट. आप रिस्पॉन्डेंट से पूछ के जो है फिर आप उसकी जो आइडेंटिफिकेशन है, उसकी जो शनाख्त है, उसको डिस्क्लोज कर सकते हैं. रिवीलिंग रिस्पॉन्डेंट इन्फॉर्मेशन ओनली विद रिटन कंसेंट. आप जो है वो जब तक रिस्पॉन्डेंट आपको जो है वो रिटन कंसेंट ना दे, आप इंफॉर्मेशन उसको नहीं प्रोवाइड कर सकते. देन रिस्ट्रिक्टिंग एक्सेस टू डाटा इंस्ट्रूमेंट्स वेयर द रिस्पॉन्डेंट इज आइडेंटिफाइड. एंड देन यू रिस्ट्रिक्ट द एक्सेस टू डाटा इंस्ट्रूमेंट. जो इंस्ट्रूमेंट्स यूटिलाइज हुए हैं डाटा को एक्सट्रैक्ट करने में, where the respondent is identified, यहाँ पे उसकी complete details है वो आप ना provide करें. A non-disclosure of data subsets privacy is more than confidentiality. A right to privacy means one has the right to refuse to be interviewed or to refuse to answer any questions in an interview. Potential participants have a right to privacy in their own homes, including not admitting researchers and not answering telephones. So, चांसेस है हाई कि आप जो है वो राइट टू प्राइवेसी का मतलब ये है कि उनको जो इंफॉर्मेशन जो लगता है कि पब्लिक नहीं करनी चाहिए वो आप ना करने दें, वो आप ना करें. और आप जो पोटेंशियल पार्टिसिपेंट्स हैं जिन्होंने फ्यूचर में आपके साथ पार्टिसिपेट करने रिसर्च के अंदर या आपको डाटा प्रोवाइड करने के अंदर, उनकी प्राइवेसी को आप सेफ गार्ड करें. To address these rights, ethical researchers do the following thing. जो ethical researchers हैं वो ये चीज़ें कर सकते हैं. Inform respondents of their right to refuse to answer any questions or participate in the study. आप पहले ही बता दें कि अगर आपको ठीक नहीं लगता तो आप किसी भी टाइम पुल बैक कर सकते हैं. आप किसी सवाल का जवाब नहीं दे सकते. आप उस स्टडी के अंदर अगर चाहें कि एज अ पार्टिसिपेंट आप उसको क्विट कर दें तो आप कर सकते हो. ऑब्टेन परमिशन टू इंटरव्यू रिस्पॉन्डेंट्स. आप उनकी इंफॉर्मेशन लेते उनसे जो है वो परमिशन लेते हैं उनको रिकॉर्ड करने के लिए, उनके इंटरव्यू को जो है वो रिकॉर्ड करने के लिए. स्केड्यूल फील्ड एंड फ़ोन इंटरव्यूज़. आप स्केड्यूल करते हैं किस टाइम किसके साथ आप फ़ोन पे इंटरव्यू करेंगे, किस टाइम किसके साथ जाके मिलेंगे आप. लिमिट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर पार्टिसिपेशन. आप जो एक टाइम रिक्वायर्ड है पार्टिसिपेट करने का उसको लिमिटेड कर देते हैं. रिस्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशन टू पब्लिक बिहेवियर ओनली. और जो ऑब्जर्वेशन है उसको सिर्फ पब्लिक बिहेवियर तक रखते हैं. कोई स्पेसिफिकली अगर आप किसी टॉपिक के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं तो तब आप परमिशन ले के ऑब्जर्वेशन के फेज के अंदर जाते हैं. The obligation to be truthful. When a subject willingly agrees to participate, it is generally expected that he or she will provide truthful answers. आप आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है एज अ रिस्पॉन्डेंट? अगर आप किसी को रिसर्च के अंदर हेल्प कर रहे हैं तो आपको चाहिए कि यू शुड प्रोवाइड ट्रूथ
full information to the best of your abilities. Honest cooperation is main obligation of the respondent to the or the subject. Ethics and the sponsor. There are also ethical considerations to keep in mind when dealing with the research. Client or sponsor has the right to receive ethically conducted research. Confidentiality of the sponsor. Sometimes respondents wish to undertake research without revealing themselves. They have a right to several types of confidentiality, including sponsor and non-disclosure, purpose non-disclosure, and finding non-disclosure. Companies have the right to dissociate themselves from sponsorship of a research project. This type of confidentiality is called sponsorship non-disclosure. Due to sensitive nature of the management dilemma or the research questions, sponsor may hire an outside consulting or research firm to complete research project. This is often done when a company is testing a new product idea to avoid potential consumers from being influenced by companies current image or industry standing. तो ये जो है इसके अंदर companies का discretion है that can vary. Purpose non disclosure involves protecting the purpose of the study or its details. A research sponsor may be testing a new idea that is not yet patent and may not want the competition to know its plans. It may be investigating employer complaints and may not want to spark union activity first. Finally, even if a sponsor feels no need to hide its identity or the study's purpose, most sponsors want the research data and findings to be confidential. ज़्यादातर जो रिस्पोंडेंट्स है वो चाहते हैं कि रिसर्च डाटा को कॉन्फिडेंशियल रखा जाए एट लीस्ट अंटिल द मैनेजमेंट डिसीजन इज मेड. जब तक मैनेजमेंट का डिसीजन नहीं दे दिया जाता, जब तक कंपटीशन जो है उनको लगता है कि मार्केट के अंदर नहीं है, वो अपनी प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे होते हैं, तब तक वो जो है वो चाहते हैं कि जो भी उन्होंने रिसर्च कंडक्ट की है और जो भी इंफॉर्मेशन उन्होंने गैदर की है उसको कॉन्फिडेंशियल रखा जाए. The sponsors usually demand and receive findings and non-disclosure between themselves or the researchers and any and interested but unapproved parties. कोई भी unapproved parties जो है वो NDA साइन कर सकती है, रिसर्चर कर सकता है. तो confidentiality maintain करना is very significant. Right to quality research. An important ethical consideration is the sponsor's right to quality research. Sponsor चाहता है कि उसके लिए जो रिसर्चर रिसर्च कंडक्ट कर रहा है वो क्वालिटी वाइज बहुत अच्छी हो. The right entails sponsor के rights क्या है? Providing research design appropriate for the research question. आप एक proper research design उसे बना के दें, proper research questions बना के दें, maximizing the sponsor's value for the resources expended. आप रिसोर्सेज उसको क्लियरली और क्या कहना चाहिए फेयरली लिख के दें कि कौन सी चीज़ बजट जो एलोकेट हो रहा है वो कहाँ कहाँ जा रहा है. प्रोवाइडिंग डाटा हैंडलिंग एंड रिपोर्ट टेक्निक्स अप्रोप्रिएट फॉर द डाटा कलेक्टेड. आप प्रॉपर उसको जो है वो इन्फॉर्मेशन दें, खुली इन्फॉर्मेशन दें, डाटा कहाँ से आपने लिया है, डाटा को आप हैंडल कैसे कर रहे हैं और बाद में आपने कौन कौन सी रिपोर्टिंग टेक्निक्स यूज़ की हैं डाटा कलेक्ट करने के लिए. Sponsors ethical ethics occasionally. Research specialists may be asked by the sponsors to participate in unethical behavior. Compliance by the researcher would be a breach of ethical standards. Some examples to be avoided are violating respondents' confidentiality, changing data or creating false data to meet the desired objective, changing data presentation or interpretations, interpreting data from a biased perspective, omitting sections of data analysis and conclusion, making recommendations beyond the scope of data collected. ये सारा researchers and team members. Another ethical responsibility of researcher is their team safety as well as their own. The responsibility of the ethical behavior rests with the researcher who, along with assistants, is charged with protecting the anonymity of both the sponsor and the respondent. Safety क्या है? It is the researcher's responsibility to design a project so the safety of all the interviewers, surveyors, experimenters और ऑब्जर्वर्स इज प्रोटेक्टेड. जितने लोग भी इस प्रोसीजर के अंदर इन्वॉल्व हैं सबकी लाइफ जो है वो सिक्योर हो, किसी को भी कोई खतरा ना हो. Several factors may be important to consider in ensuring a researcher's right to safety. Ethical behavior of assistants. Researchers should require ethical compliance from team members just as sponsors expect ethical behavior from researchers. Assistants are expected to carry out the sampling plan, to interview or observe respondents without bias, and to accurately record all the necessary data. Assistant रखते हैं आप research assistant जो कि आपको research के अंदर data collection के अंदर लोगों को interview करने के लिए help out कर रहे होते हैं. They should also fulfill their end of bargain. They should also be very ethical.
Protection of anonymity. Researchers and assistants to protect the confidentiality of the sponsor's information and anonymity of the respondents कि उनका anonymity का मतलब है कि जिसके ऊपर नाम ना हो गुमनामी जो है उसको इंश्योर करना उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है each researcher handling data should be required to sign a confidentiality and non-disclosure agreement or statement professional standards various standards of ethics exist for professional researchers. Many corporations, professional associations, and universities have code of ethics. These code of ethics have to be ensured. So this is it for today.